I would like to say 2 lines in my mother language, Bangla. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত এবং চরম জলবায়ু সংকটের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর যে কোনো জায়গার চেয়ে বাংলাদেশেই বেশি। তাই COP27 এবং COP28 জলবায়ু বিষয়ক পরবর্তী এই 2 সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার সিদ্ধান্ত সকল দেশের চেয়ে বেশি প্রয়োজন বাংলাদেশেরই। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि यूएनए के अंदर जिसको भी मौका मिलता है बात करने का, उसकी कोशिश होती है कि इंग्लिश में बात की जाए ताकि सबको समझ आ सके। लेकिन आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश की नन्ही बच्ची के हवाले से कि जब उसको मौका मिला यूएनए के अंदर बात करने का तो उसने किस लैंग्वेज में बात की। इंग्लिश भी आती थी, अरबिक भी आती थी, लेकिन बंगाली ज़बान का इंतखाब किया गया। अपनी मादरी ज़बान बंगाली के अंदर उन्होंने बात करना मुनासिब समझा और ये बात की कि मैं अपनी मदर लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज में बात करूंगी। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। जो इज्जत, जो मकाम आपको चाहिए, आपकी ज़बान को चाहिए, आपकी लैंग्वेज को चाहिए, वो बांग्लादेश की बच्ची ने दिया है यूएनए के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। I would like to say 2 lines in my mother language, Bangla. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত এবং চরম জলবায়ু সংকটের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর যে কোনো জায়গার চেয়ে বাংলাদেশেই বেশি। তাই COP27 এবং COP28 জলবায়ু বিষয়ক পরবর্তী এই 2 সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার সিদ্ধান্ত সকল দেশের চেয়ে বেশি প্রয়োজন বাংলাদেশেরই। এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের মানুষেরা ঘর বাড়ি হারিয়ে পরিণত হচ্ছে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে। আমি বিশ্ব নেতাদের কাছে দাবি করছি, এখনই একটা বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এই অসহায় মানুষগুলোর জন্য। Fatiha Ayat, you are also civil child rights activist and climate campaigner, winner of President's Education Award, author of several publications, and very outspoken about the role of youth in climate action. Please share with us your perspectives on what the UN should do, what organizations like IAI, GLOCHA, IYC network also should do, or what every one of us could do to tackle the climate crisis. Thank you, Mr. Polzer, for introducing me. But I would like to introduce to you all a friend of mine from Bangladesh named Asha. Asha means hope. Her parents named her Asha because the year she was born, in 1992, was the year of adoption of the United Nations Framework Convention on Climate Change. This framework was a great hope to her family, as in the immediate last year, in 1991, they had lost their home, harvest, and livestock by the deadliest tropical cyclones on record, causing over 140,000 deaths and showing the consequences of climate change. Like other speakers today have mentioned, unfortunately, the substantial reduction of the commitments of substantial reduction of greenhouse gas emissions in this framework remained as a paper recipe. No real food was ever cooked. But Asha and her family did not lose their hope, as in 1997, our leaders adopted the Kyoto Protocol. But within less than 1 year, in 1998, Asha and her family experienced the most deepest, extensive, and longest lasting flooding of the century, leaving contaminated water causing cholera and typhoid outbreak. But since Asha literally means hope, they continued to keep faith on our world leaders when they consented to agree upon the Bali Action Plan in 2007 and the Copenhagen Accord in 2009. But in 2007, they were struck by Cyclone Sidr, and in 2009, they were struck by Cyclone Aila, in the exact same years as when those conventions were organized.
Asha lost both her parents in the cyclone Sidr, in a landslide, and their farming land turned saline, and their natural water source was inundated with salt water. But still, Asha kept faith on our world leaders when they acknowledged climate mitigation and sustainable adaptation in the Paris Agreement in 2015, with a commitment to mobilize more than $100 billion a year. But instead of getting even a single dollar rehabilitation project, Asha became a climate refugee. Not Asha alone. Only in the last year, climate-related factors have resulted in the migration of around 8 million youth. It is estimated that by 2050, almost 100 million youth will be forced to leave their homes as a result of deforestation, desertification, sea level rise, and extreme weather conditions. Exposure to extreme weather irregularity and rapid rainfall fluctuations make them more prone to recurring drought or rainfall. So now I don't have the courage anymore to look directly into the eyes of Asha and tell her to hope for anything from our world leaders after the failure of the Glasgow Climate Pact 2021. Sea level is rising 2.3 meters per 1 degree temperature rise. And as for 1 meter rise of sea level, 30 million people, like Asha, are losing their homes in the coastal regions. And who is responsible for this? The leaders of the first world countries, the governments of the highest carbon emitting countries. They have catastrophically betrayed humanity at large by failing to protect the people most affected by the climate crisis. They have discarded the most marginalized communities as expendable collateral damage. Dear leaders, if you fail again in the COP27 to make a commitment to maintain the global temperature rise at 1 degree Celsius, it will condemn more than 500 million people, mostly in the global south, to insufficient water and to extreme heat waves. It will be bitterly disappointing to see any loopholes in the COP27 agreement which will bow to the interests of fossil fuel corporates rather than our rights. The agreement shall call for the phasing out of all fossil fuel subsidies, an action which is much needed at this current time. The Glasgow Climate Pact, for all its restrained and diplomatic language, looks like a suicide pact. After so many denials, distractions, and delays, it is too late for incremental change. What we need at the COP27 is a strong decision to burn no more fossil fuels after 2030, because there is no room to compromise the real zero-emission strategy. We all need a deal in the next climate conference at Egypt, and no other country needs it more than my country, Bangladesh, does. There are more people in Bangladesh suffering from extreme conditions and extreme heat waves than anywhere else on this planet. Hence, as a victim of climate change caused by the highly industrialized countries, I demand to the first world countries to share their skill and knowledge of climate technology and to invest on clean energy in Bangladesh. I demand our world leaders to stop playing this dirty card of politics using the climate refugee and to act immediately in favor of these vulnerable people. Because the extreme conditions and bitter experience that the people of Bangladesh are facing right now will soon affect us all. So as my closing remarks for this speech, I would like to say 2 lines in my mother language, Bangla. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত এবং চরম জলবায়ু সংকটের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা চেয়ে বাংলাদেশেই বেশি। তাই COP27 এবং COP28 জলবায়ু বিষয়ক পরবর্তী এই 2 সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার সিদ্ধান্ত সকল দেশের চেয়ে বেশি প্রয়োজন বাংলাদেশেরই। এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের মানুষেরা ঘরবাড়ি হারিয়ে পরিণত হচ্ছে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে। আমি বিশ্ব নেতাদের কাছে দাবি করছি, এখনই একটা বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এই অসহায় মানুষগুলোর জন্য। থ্যাংক ইউ। তো
तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि आपको जब मौका मिलता है तो आप वहाँ पर कोशिश करते हैं एजुकेटेड होने की, आप वहाँ पर कोशिश करते हैं कि फ़ॉरेन लैंग्वेज में बात की जाए। लेकिन आज देखें तो आगाज़ तो इंग्लिश में किया, उनको मतलब समझाया अपनी बात करने का, उसके बाद बंगाली ज़बान में बात की, अपनी ज़बान को प्रमोट किया, यूएनए के अंदर बंगाली ज़बान में बात की और समझाने की कोशिश भी की। पहले उनको एड्रेस इंग्लिश में किया, उसके बाद अपनी आवाम को समझाने के लिए, अपने लोगों को मतलब बताने के लिए बंगाली ज़बान भी इस्तेमाल की। तो ये बड़ा प्राउड की बात होती है कि आपको किसी बड़े फोरम पे बात करने का मौका मिलता है और आप वहाँ पर अपनी मदर लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, अपनी मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और उनको जवाब अपनी मदर लैंग्वेज में देते हैं। तो ये इज़्ज़त है, ये वो मकाम है जो बंगालियों ने अपनी ज़बान को दिया है और आज इंटरनेशनली फोरम के ऊपर भी बंगाली ज़बान को वो इज़्ज़त, वो मकाम हासिल है जो बंगाली चाहते थे, जिसके लिए जदोजहद की गई थी, आज उसमें कामयाब होते हुए नज़र भी आती हैं। बांग्लादेश की नन्ही बच्ची ने क्या खूब जवाब दिया है और साथ ही साथ अपनी लैंग्वेज को भी दुनिया को दिखाया कि मैं अपनी लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, बंगाली ज़बान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। आज दुनिया में अगर बंगालियों को कोई मकाम मिला है तो इनके लोगों की, इनकी ज़बान की वजह से, इनकी लैंग्वेज को इज़्ज़त देने की वजह से मिला है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।